Happy New Year, everybody, to Waadaplaya concussion subs all over the globe. Hope you had a great break for New Year's. 2022 brings more cricket and more talking. So, first test match of the year was Bangladesh versus New Zealand, and then India started in Johannesburg, the second test, after that centurion win. And day one was pretty interesting because our beloved captain had spasms, so he couldn't play. So KL Rahul made a debut. To talk about how it went, we have Mayur back on the show on New Year's and Sanjay Dubey. How was New Year's in London and how was New Year's in Bangalore? In London, the New Year's Eve was the mildest ever in recorded history, so it was quite good. Otherwise, it's like close to 0 degrees temperature. Okay, bye bye. Uh, it was 0 degrees otherwise, so it was mild. Yeah, just staying inside, trying to avoid this new variant as much as we can. Mayur? Bangalore, well, on papers it was quiet, but yeah, people did manage to go to farmhouses and house parties. But yeah, the weather was good, and yeah, thankfully, not much of any incidents, which was like a regular in previous years. So yeah, good New Year. Excellent, excellent. So, as a refresher and update for team score for South Africa and India's second test in Johannesburg, India bowled out on day one for 202 and South Africa 34 for 1. So, let's start with the first big news. Yesterday, Virat Kohli posted on his Twitter account that he's all set for 2022, and then this morning he's not part of the team. Quite a shocker, Mayur. I mean, definitely, because this morning I was reading an article and where Dravid said that he's anytime due for a good score. Quite a shocker. I mean, someone like Rohit Sharma says a back spasm, I can take it, but a man with a fitness such as Virat Kohli, it was a shocker, but it could be true. You never know. But yeah, I mean, as a batsman, definitely he was missed because considering the form of Pujara and Rahane, you needed someone who's a busy player to keep the scoreboard ticking, play one or two aggressive shots, and give it back to the bowler. But yeah, I think we have enough bench strength to win the test match without him, as we've seen in the Australian series and the first test that Rahane captained in Mohali. Yeah, so keeping fingers crossed, even without him, I don't see this test match going until the fifth day, given how lively the pitch is. Probably third or fourth day, we should have a result. हम्म, संजय आपको क्या लगता है फाइनली विहारी जी का एंट्री हो गया टीम में केएल राहुल कैप्टनसी आपका क्या ख्याल है विराट विहारी और केएल कॉम्बिनेशन तो सबसे पहले तो मेरी इंग्लिश थोड़ी लचर है तो मैंने स्पैज्म गूगल किया है स्पैज्म इज अ सडन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन और कन्वल्सिव मूवमेंट तो इसमें ऑपरेटिंग वर्ड इज सडन तो क्यों आप लोग डाउट कर रहे हैं यार विराट कोहली टेस्ट मैच खेलते ही अगर वो फिट होते वो चाहते हैं कि 100वां मैच यही हो जाए अब आगे कौन 6 महीने बाद देख रहा है कि बैंगलोर में मैच होगा श्रीलंका के साथ या क्या तो आई एम श्योर ही वुड हैव वांटेड टू प्ले इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी Yeah, यू नो ऑथराइज हिज प्रेजेंस और कुछ रन वन बना के ये सीरीज यहीं खत्म कर देते हैं केप टाउन तक केप टाउन डेड रबर हो जाता बट केएल राहुल कैप्टनसी एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग कि अजिंक्य रहाणे को रेस्ट स्लैश ड्रॉप किया गया था होम सीरीज में तो और केएल राहुल वाइस कैप्टन थे तो उनका कैप्टन बनना बनता था तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू विहारी का व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज ठीक है मुझे लगता है अगर अय्यर फिट होते तो ये लोग विहारी को खिलाते ही नहीं अय्यर को ही खिलाते और अय्यर को अपसेट स्टमक था हाँ तो आपका मतलब क्या था आपने मतलब होम सीरीज में इतने सारे दिग्गज लोग सीट पे बैठे थे रेस्ट ले रहे थे तब ने आपने विहारी को खिलाया नहीं ऐसा तो नहीं कि विहारी को बैटिंग नहीं आती वो होम सीरीज में रन बना देते और यहाँ इसीलिए वो खेल रहे हैं बिकॉज अय्यर फिट नहीं थे yeah. डिड रियली वेल 20 और जो रन बना बहुत अच्छी थी वो जो पार्टनरशिप था आई थिंक दैट्स अ मैच विनिंग पार्टनरशिप वो और जो अश्विन ने बनाया तो मुझे लगता है ओवरऑल दिस इज इंडियाज डे कंसिडरिंग हाउ गुड द और बैड द पिच इज ये मेरे को लगता है इंडिया मैच 3.5 दिन में जीत जाएगी हाँ and Mayur what about KL Rahul 50 Ajay feels that he missed out on a ton do you think Yeah, he definitely did miss out. His shot to on which he got out, I think it was a little bit too much outside the off stump for him to pull. But yeah, he was tested enough with short balls. I think he tried to give it back so that if I manage to score a six, they will stop bowling short balls to me. But it was the only shot which I feel was kind of reckless by him. But still a fabulous innings. I mean, still
an opener scoring 50 is as good as a number 3 or number 4 player scoring 150. So still, I mean, still, as I said in the last preview, if the floodgate opens in the first 2 3 wickets fall quickly, you never know how quickly South Africa can just come over this Indian team. But very crucial runs. Mayank Agarwal also is scoring the runs. Doesn't matter, he's not getting the 50s or the hundreds, but they are telling the opposition we are here for a fight. So yeah, Rahul's 50 very very crucial, equivalent of a century in my eyes, given how lively the pitch was. एंड संजय, साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन फाइनली लगता है दे गॉट इट राइट. उन लोगों ने ओलिवियर को बुलाया है, जो टिम फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो प्रीव्यू किया था, उन्होंने काफी हाईली ही स्पोक अबाउट इट. एंड इफ यू लुक एट हिम नाउ वी कैन सी व्हाई ही इज बीन हाईली स्पोकन अबाउट. ब्रिलियंट बॉलिंग. Mayank Agarwal ka wicket was quite spicy. So what are your thoughts? South Africa 202. I know you mentioned that it is India's day, but won't South Africa feel that it is 50-50 honors, if not advantage South Africa on day one? हाँ, अगर आप साउथ अफ्रीका हैं तो इससे अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था. आपके पास थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी है. ओलिवियर जैसा हमने सोचा था कि वो अच्छी करेंगे. यानसन ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की. ओलिवियर ने काफी रन्स भी दिए. 1-2 विकेट उनको लकी मिल गए. वो खुद भी शार्दुल ठाकुर का आप देखेंगे विकेट तो कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे थे, ऐसा मुझे लगा. बट ओवरऑल आई थिंक दे डिड रियली वेल. अब ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बिहारी का विकेट था, इतना बॉल जो उछल रहा है, और एल्गर का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एल्गर फ्लैट विकेट पे भी मुझे लगता है हर बॉल उनके ग्लव्स पे ही लगती है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड है भी बैटिंग में. बट काफी लाइवली पिच है. अगर अपने बॉलर्स पूरे फिट रहे तीनों जो मेन है, एक सिराज आई थिंक थोड़ा हैमस्ट्रिंग इंजरी ऐसा लग रहा था कि शायद उनको होगा, बट दिस लुक्स वेरी वेरी लाइवली पिच. और थोड़ा अगर लक साथ दे इंडिया का, जैसे कैच वैच नहीं अगर छोड़े हम, आज जो एक कैच छूट गया, तो मुझे लगता है इसमें इक्वल एट पार 200 अगर साउथ अफ्रीका को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फोर्थ इनिंग्स में 150 भी यहाँ चेस करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है. बट ऑब्वियसली एक अच्छी कोई पार्टनरशिप, और इसमें की यही है कि कोई जितने भी लोगों ने रन्स बनाया है एट सम पॉइंट दे हैड टू टेक सम चांसेस, और थोड़ा अच्छा उन्होंने बैटिंग किया तब रन्स बने. राहुल भी उन्होंने इवेंचुअली थोड़े शॉट्स खेलने के तभी थोड़े यहाँ रन्स बने. मयंक ने अच्छी पारी की, और अश्विन ने तो सुपर काउंटर अटैक मुझे वो 90 ऑड याद आता है हार्दिक पांड्या का इन द प्रीवियस टूर. वो भी मैच हम जीते नहीं थे. तो आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी क्लोज, बट आई स्टिल थिंक कि I'd much rather be in India's camp. ऐसा मुझे लगता है, बट हमारी मतलब depends. So it's beautifully set up. And Mayur, Vihari, was that a no ball is the question, and should umpiring be up to the mark? So I haven't watched that particular wicket, but what is your thought, Mayur? Oh, it was close to a no ball, but not a no ball for sure. I mean, test match, you expect this kind of a length, but it didn't seem like a no ball. But yeah, as Sanjay pointed out, it just came out of the rough. But yeah, just stressing on Vihari, I mean, I don't know why he's so unlucky that only when in Australia you didn't have key players, you bring him in. It's high time the management realizes and places him ahead of, the others. And I hope he doesn't continue to be a journeyman for Indian team, like always there for the team, but never in the limelight. और काफी दिग्गज इंडिया क्रिकेट के काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं दो प्लेयर के नाम पे, पुजारा एंड रहाणे. बोलते हैं दिस इज द लास्ट इनिंग्स ऑफ देयर करियर. एंड अजय पीके भी काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. आर दे बैगेज? इतना हार्श होना चाहिए क्या इन दोनों के लिए? मैं देख रहा था कोई स्टैट की लास्ट 1.5-2 साल में पुजारा, रहाणे और विराट कोहली के तीनों के मिला के 25 की एवरेज है, और एक ही 100 है जो रहाणे ने ब्यूटीफुल एमसीजी में स्कोर किया था. आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि देयर इज अ डेंजर दैट 1-1.5 साल बाद, जब क्योंकि रहाणे, पुजारा, कोहली सब 33 साल के हैं, अश्विन 35 साल के हैं, रोहित शर्मा 35 साल के, नेक्स्ट 2-3 साल में ऑलमोस्ट एक बड़ा गैप होने वाला है. और अगर आप नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को एक और इनिंग्स के बदौलत कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, सो यू विल सी कि आफ्टर 2 years जो भी टेक ओवर करेगा, देयर विल बी अ बिग वॉइड इन द मिडिल ऑर्डर. तो जो नॉन परफॉर्मिंग है, although we are winning, we should make that change. We should make that call. I'm sure अगर हम इतने मैचेस नहीं जीते होते तो we would have changed them. Just because we are winning, we are carrying these players. And I really like पुजारा और रहाणे, ये लोग बहुत अच्छे ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा इनका कंडक्ट वगैरह है, बट यू कांट जस्ट कैरी ऑन
based on some past performances. After a point, you have to make that call, or irrespective of what happens in the second innings, I think at least one has to go. This is what I think. There's no way otherwise you'll keep grooming players. और जो groom करने की हम बात करते हैं, जब प्लेयर्स फॉर्म में हो तब उनको ग्रूम करके फायदा है. अब आप किसी को कैरी कर रहे हैं लेकिन अगर उसको चांस ही नहीं मिलेगा तो कब अपना परफॉर्म करके आगे बढ़े. मयूर, आपको आपको क्या लगता है? आई थिंक इज दिस द लास्ट इनिंग्स बोथ ऑफ देम विल बी गिवन चांस? I think if next test match, definitely only one of them should play. I would choose Rahane because still he's scoring a bit. He's a brilliant fielder. He can field at the key positions. But Pujara, yes, he is a baggage for now. Probably if you still want to give him a last try, keep him only for domestic matches. But in overseas conditions, it's very easy to dismiss him because his stance, he just hangs the bat. He tends to poke at deliveries, whereas not someone who would literally go wholeheartedly for a shot. So for his batting style, I think if you still want to keep him for domestic matches, for matches in India, but get someone like Iyer, Vihari in. I mean, Iyer has been knocking at the selector's door for a long, but if you continue to not give the youngsters chance at an international level, no wonder you're seeing Unmuk Chand, guys like them trying abroad. But yeah, it's high time Pujara has to be rested. I mean, I still feel Rahane can offer something, but yeah, Pujara, very difficult. और पुजारा के एक पॉइंट में और ऐड करूंगा कि स्पेशली ओवरसीज, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट फ्रॉम मयूर, बिकॉज आप उनकी पूरी करियर में आप देखेंगे तो उनका इनिंग्स का एक ट्रेंड है, वो शुरू में बहुत डिफेंड करते हैं और जब स्पिनर्स आता है उनको तो वो रन बॉल या उससे भी ज्यादा स्कोर करते हैं. एंड ऑन दीज लाइवली पिचेस इसमें कोई गेट अवे रिलीज पॉइंट कोई मिलने नहीं वाला. ऐसा नहीं कि महाराज 15-20 ओवर करने वाले दिन में, तो ये वही स्टक हो जाते हैं. दैट इज द इशू. और वो दूसरा प्रेशर फिर फील करता है. रहाणे थोड़ा उन पेस में अच्छा खेलते हैं और काउंटर अटैकिंग इनिंग्स भी यहाँ वहाँ थोड़े उनके दिख जाते हैं. तो मुझे लगता है पुजारा का थोड़ा सा टाइम मतलब अब आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे भी. बट Last point to add, Rahane is still dispatching good balls for boundaries, but Pujara only waits for the bad deliveries. And at an international level, you're not playing against a club team that you will get a bad delivery in every over. So, yeah. I feel in the pecking order, Rahane is above Pujara. I feel Way that above. Pujara probably will be dropped and Rahane will continue to retain. And if Virat Kohli comes in, Pujara will make way and Vihari will continue. But we will see. Having said that, let's come to our superstar, Ravichandran Ashwin. If not ball, he will use bat to prove that he is capable. What about his contributions? बहुत ही अमेजिंग नॉक. एक तो मतलब पिछले साल में 2021 में मेरे ख्याल से 2-3 बहुत यादगार इनिंग्स थी. एक चेन्नई में रोहित शर्मा ने जो 100 मारा था, फिर एक लॉर्ड्स में जो केएल राहुल ने 100 मारा था, फिर एक 70 और जो चेन्नई टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली ने, और उसी इनिंग्स में अश्विन ने जो 100 बनाया था. दैट जस्ट शोज हिज क्लास. तो लोग सोचते कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो ज्यादा अच्छे खेलते, बट दिस इज एज गुड एज 80-90 ऑन एनी अदर वेन्यू और एनी अदर मैच. तो उनको बॉलिंग उतना मिलने का चांसेस है नहीं वैसे भी, क्योंकि जोबर्ग में 4-5 सालों में हार्डली कोई स्पिनर ने विकेट लिया है. तो अनलेस सेकंड इनिंग्स में या कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगती है, मुझे लगता है उनको थोड़े यहाँ वहाँ ओवर्स डिफेंड करने मिलेंगे. बट दिस इज अमेजिंग फ्रॉम हिम और इससे बहुत कॉन्फिडेंस को मिलेगा फॉर ओवरसीज. बिकॉज मुझे लगता है आज भी अगर जडेजा फिट होते तो टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है जडेजा की बैटिंग पे कि वो जडेजा को ही खिलाते आगे. तो आई थिंक दिस इज ग्रेट साइंस फॉर हिम. You're right. अगर साउथ अफ्रीका का बॉलिंग देखा गया, उनका बॉलिंग स्कोर कार्ड, केशव महाराज bowled only 1 over. So will be interesting as to how Ashwin will perform. Mayur, thoughts on his batting and contributions, and if you then compare him to, he batted above Pant, if I'm not wrong, or he came after Pant? And After Pant. So one question for both of you guys, starting with Mayur. We are putting so much pressure on Pujara and Rahane and their places at risk. What about Rishabh Pant? After that Gabba innings, I didn't see anything which is noteworthy. He's still playing. I mean, I'll answer in the order. First, about Ashwin's batting, it was a brilliant knock. I'm sure even KL Rahul must be wondering what did he do that I couldn't do, scoring at almost a runner ball. And it was very good to see that he didn't carry the baggage on his head that, okay, previous batsmen struggled, even I will struggle.
He just played the ball on its merit. He went in with confidence, and it showed the way he batted. Probably like Rahul, he also the only bat shot he played was on the one on which he got out, because he isn't a batsman who would cut outside the off stump line. He's more of a playing in the V kind of a player. And coming to your second question, like Rishabh Pant, I mean, still the last match, the 30 odd that he scored in the first innings, in the second innings, he's still playing really well. I mean, by far the best keeper batsman India has ever had. So no doubts with Rishabh Pant. Although yes, today he dropped one, but Dhoni dropped many. So Pant is good. मैं तो एकदम ऐसा मेरे को पहली बार कोई मिला है जो मेरे मेरे ऋषभ पंत जो बेस्ट बैट्समैन एवर, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, जो एग्री Yeah, करता है, बिकॉज सबको yeah, लगता है yeah. धोनी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट प्लेयर थे. इट्स नॉट दैट केस. धोनी बहुत ही बेकार थे मेरे हिसाब से, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशन. इन टेस्ट मैचेस ही वाज पुअर, टू बी ऑनेस्ट. उनकी जितनी भी आप देखेंगे 50-50 सब मैच लूजिंग नॉक्स में आए, कॉजेस में आए. ऑन पंट्स फॉर्म आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट इतना बेकार रहाणे, कोहली और पुजारा Pujara. खेल रहे हैं कि उसका ये ओवरशैडो हो जा रहा है. अविनेश ने भी हमारे ग्रुप में यही कहा था. तो जब तक इन लोगों का नंबर आगे लगता है, किसी को चेंज फेरबदल करना है तो इनका नंबर आगे है. बट पंत आई Just to थिंक Just to add, let's look at it this way. Pant is still a youngster. If he wants, if seeing that, okay, maybe next series I won't play, he can play it safe, but he still keeps the team ahead, scores the runs. And he knows there are enough keepers in India. Ishan Kishan is there, Saha is still raring to go. But imagine if Rahane Pujara scored, Pant would have come, taken his time, and then belted the bowlers. But ये लोग इतने जल्दी out हो जा रहे हैं. So he has to try and stretch the score, right? I mean, I see no issues with Pant. I mean, other teams would still be after, like, he's like the Gilchrist of India by far. Seriously. Potential He is can, yeah, nobody's he going can to turn question. around the match in no time. We've all seen that. But still, with Dravid, I mean, even with Shastri, he at least is trying when the situation is tough. He's trying to acclimatise, giving time. But when he knows after him, it's only the tail. So he has to try and score. It's a one way, my way or highway thing for him. Mm. But yeah, imagine when he comes in, if Pujara and Rahane are well set, then you'll see a different Panth altogether. Most definitely. And CKM sir posted quite a elaborate summary, and I think he agrees with both of you that the game definitely is India today, day one. And he points out that after getting 20, 30 runs, throwing away wicket with rash strokes is unpardonable. So the axe is definitely on Pujara and Rahane from across the globe. Word on South Africa bowlers, Rabada, Hansen, and Olivier. Uh, their performance, I mean, both of them are inexperienced, Hansen and Olivier, and they combine taking 7 wickets, and that too all top order. So they are coming as more confidence. And second innings, they'll be effective, or is this a flash in the pan? मुझे लगता है अच्छी गेंदबाजी की. आई मीन 202 रन अगर ऑपोजिशन टीम पहले बैटिंग करती है तो देयर एक्सपेक्टेशन इसकी एटलीस्ट पूरा दिन तो खेलेगी. तो इंडिया ने मुझे लगता है 250 शायद ऑन पार होता है, ऐसा लग रहा है मुझे, कंसिडरिंग हाउ लाइवली द पिच इज, जैसा मयूर ने भी कहा. तो 200 रन पे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत अच्छी पारी थी. ये जो रैश शॉट्स का जो सीके एम सर ने कहा है वो मुझे लगता है बिकॉज एवरीवनस प्रॉब्ली रियलाइज कि यहाँ रन बनाने का यही तरीका है कि आप थोड़ा चांसेस लेके खेलें, वरना कोई ना कोई बॉल में आपका नंबर होगा. आप 40-50 बॉल खेलेंगे, 2-3 रन बनाएंगे और आउट हो जाएंगे. तो इसीलिए लोग शायद थोड़ा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफी यंग टीम है उनकी, एंड आई थिंक दिस विल बी अ क्रैकिंग गेम. Yeah, and I feel that anything around 200 chasing or batting fourth will be a tough proposition. So first innings, I think tomorrow's day will be crucial. And both Yeah. of you strongly feel that this will not go to fifth day. Not at all. Not at all. Okay. 3 दिन का मैच है ये. बारिश अभी हो ही रही थी वहां, और बारिश 1-2 दिन भी हो जाए, मैंने लास्ट में भी कहा था मुझे नहीं लगता ये If जाएगी. if if this goes to fifth day without bad weather interruption, come to Bangalore, beers on me. That's, that's excellent. Amazing. Good day one for Test cricket. I think 11 wickets fell for 237 runs. So pitch is definitely a
a result-driven pitch. Sanjay, thanks for making time. Really appreciate it. Mayur, appreciate again Thank your insights on Test 2 as well. Hopefully see you guys tomorrow, and folks who have engaged, Ajay sir and CKM. Sir, thank you very much, and see you next time on the other side. Enjoy and Happy New Year. Thank you, guys. Thank Be safe. you. Happy New Year. Century by an Indian batsman tomorrow, hopefully. Okay, that's great. See you later. See you. Yeah. Bye.